Welcome back. MNS Chief Raj Thackeray is under fire for his threat to brand people from Bihar as infiltrators. But even more than him, it's the Congress NCP government in Maharashtra that's being slammed for not acting against Thackeray for his hate speeches. A furious Bihar Chief Minister Nitish Kumar has already said the state and centre have allowed the MNS to get away with these kind of comments. Meanwhile, a case has been registered against Raj Thackeray in Bihar. इस प्रकार की सरकार चला रही है कांग्रेस पार्टी। कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोले, क्या ये संभव है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को सख्ती से सख्त धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड पूरे के पूरा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। United in their outrage against Raj Thackeray, sharply criticizing his comments and shutting down Hindi news channels if they misquote him. The escalating war of words has also engulfed the Congress-led government in the centre and Maharashtra, with several leaders hitting out against the inaction. ये जो सार्वजनिक संवाद को उग्र बनाते हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप उनको सुर्खियों में रखते हैं. Under increasing pressure, Maharashtra's Home Minister R.R. Patil, who insists law will take its own course. घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा. While Raj Thackeray has been booked in the past when his supporters went on rampage against North Indians who'd come down to Mumbai to give railway exams, in the latest round the state may struggle to take decisive action against him as police sources say there's insufficient ground to apply sections that pertain to inflammatory speech. Raj Thackeray has always been an opportunist. He just waits for an opportunity. I presume he has the sympathy of the Congress. It benefits the Congress and the NCP to tacitly support Raj Thackeray as he splinters away the Hindutva and the Marathi Manus vote bank. While Raj Thackeray is out to pick up quick political points on his home turf, the Shiv Sena has come out in his support in the party mouthpiece. It has endorsed Raj Thackeray's anger against the Bihar government, who'd protested the Maharashtra police for arresting Abdul Qadir, who desecrated the National Memorial at Azad Maidan without even informing them. In Mumbai, with Bureau Inputs and Saurabh Gupta, Nikhil Anandar, NDTV. So is the Maharashtra government afraid to take on the MNS? That's our question tonight. Ashok Malik continues to be with us. Also joining us tonight is Jitendra Awadh from the NCP, from Mumbai, KC Tyagi of the JDU, and Suhail Seth, ad guru, who joins us tonight from Mumbai as well. Let me ask Mr. Tyagi first. Mr. Tyagi, we normally do not see Nitish Kumar losing his cool and getting angry. And the very fact that he did means he is very angry. क्या उनका गुस्सा ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, because of the inaction? देखिए, ऐसा नीतीश कुमार जी के बारे में ठीक कहा, ही इज ए वेरी कूल एंड काम पॉलिटिशियन. 2010 में भी इस तरह का एक घटना हुई थी. कफील अहमद नाम के एक आतंकवादी को दरभंगा से पकड़ने के लिए जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम केस में 2010 में बुक हुए थे, उनको पुलिस आई थी और इसी तरह से पकड़ के ले गई थी. और उसको भी झारखंड में 24 घंटे तक पुलिस ने प्रोड्यूस नहीं किया था कोर्ट के सामने. उन्होंने तब भी प्रोटेस्ट किया था. लेकिन बंगलोर में देयर वाज नो राज ठाकरे टू टेक लॉ एंड ऑर्डर इनटू इट्स ओन हैंड. 1 2 मुंबई पुलिस ने जो किया है, उन्होंने भी वहां की लोकल अथॉरिटीज को बगैर बताए किया है. सीआरपीसी का सेक्शन 80 है, जिसके तहत आपको यू हैव टू प्रोड्यूस द पर्सन विद इन 24 आवर बिफोर द ऑथोरिटी. लेकिन त्यागी जी, जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को क्या लगता है कि ये इनएक्शन क्यों हो रहा है? क्या इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं दैट दे डोंट वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट समबडी लाइक राज ठाकरे? एग्जैक्टली. मैं अगर थोड़ा समय आप मुझे दें तो मुझको 1980 याद आ रहा है, जब अकाली दल का एक ब्रेकवे फैक्शन भिंडरवाला के नेतृत्व में पंजाब में एक्टिव हो गया था. अकाली दल को, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल को कमजोर करने के लिए उस समय के जो वहां के मुख्यमंत्री बाद में गृह मंत्री बने ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने भिंडरवाला को इसी तरह से बढ़ाया था, जो ज्यादा गर्म नारों के साथ अकाली पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड द नेशन नोज what happened to the nation, what happened to the Prime Minister, what happened to the Sikh community, and what happened to himself. Okay, so you're making that comparison, a controversial comparison there. Mr. Awadh, why is the Congress NCP government in Maharashtra so afraid to take on Raj Thackeray,
there's been no significant condemnation of his statements against against people from Bihar today, from the government, except that the law will take its own course. What does that mean? On the party level, we have always condemned Raj Thackeray. Not even that. We have been condemning Bal Thackeray also on his utterances which are harmful for the society. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.